Politics over the Durgapur rape horror refuses to die down. Amid nationwide anger, attention has now once again turned to Mamata Banerjee's controversial remarks, which, by the way, critics say blame the victim. Families of the survivor are demanding justice, while the opposition continues mounting pressure on the state government over women's safety. Meanwhile, the National Commission for Women, or the NCW, has also slammed glaring lapses at that in security and law enforcement, raising serious questions about preventive measures, policing and investigation in Durgapur. NDTV, meanwhile, accessed the National Commission for Women report, which also highlights deep-rooted systemic failures in ensuring safety and accountability within institutional and administrative structures. Furthermore, the report flagged total absence of street lighting and surveillance, making it unsafe for pedestrians, particularly women in this case. Now, the report also hints at the possibility of evidence tampering. That's correct. Meanwhile, the BJP has upped the ante against CM Mamata Banerjee by launching a scathing attack or another scathing attack on the Chief Minister, highlighting in this case what they call a failure of the government and women's safety in the state, that's West Bengal. The opposition charges are clear. They say that the law and order has collapsed under Mamata's watch, with women bearing the brunt of governance failures. Now, as the political tensions continue to mount, this issue is set to dominate headlines across the state. Adding to the controversy, meanwhile, TMC MP Saugata Roy has suggested that women need to exercise caution, saying that women should not leave colleagues at night. Police cannot patrol everywhere. But that's just one TMC politician for you. Another TMC MP, Kakoli Ghosh Dastidar, sparked further outrage by claiming that rape happens everywhere in the country and this was no isolated incident. अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। लेकिन महिलाओं को भी अपना कॉलेज से इतना रात में निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा पुलिस तो हर जगह पहरा नहीं दे सकता है, तो इसको थोड़ा सावधान होना चाहिए लोगों को। Well, you heard the disturbing statements there. Meanwhile, 2 more people were also arrested on Monday in connection with the Durgapur horror. Already, 3 persons were held on Sunday for the rape of the second-year MBBS student hailing from Jaleshwar in Odisha's Balasore district. Now, addressing a press conference, Durgapur Police Commissioner Sunil Chaudhary, in fact, underlined that all 5 persons whose presence was found at the scene of the crime have been arrested. Listen in to the police commissioner. अभी तक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में जितने भी अक्यूज थे, 5 अक्यूज्ड जिनका प्रेजेंस प्लेस ऑफ ऑफेंस पे इस्टेब्लिश हुआ है, हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन इस केस में सही दिशा में चल रहा है। सारी पुलिस, सारा प्रशासन, जो विक्टिम की फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ है। पहले दिन ही विक्टिम गर्ल के पिताजी से बात की है, 1 घंटा बात की है, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में आश्वस्त किया है। उनको पर्सनली मैंने बोला है उनके परिवार को, उनको जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हालांकि उन्होंने पर्सनल सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। विक्टिम गर्ल जो हैं उनको हमने 24 घंटे सुरक्षा दी हुई है।